A very good evening, viewers. You're watching Across the Republic with me, Rakhta Mishra, and at 6 p.m. today, we're going to get you a deep down coverage and investigation into all the top stories we're tracking. First up, of course, is the big win coming in for the Hindu side in the Krishna Janmabhoomi case. Also, we'll get you the latest that's happening in Ayodhya. The anger is rising, viewers, on the gang rape of a minor. The accused is an SP leader, and Chief Minister Yogi Adityanath has cornered the Samajwadi Party today in the assembly over the issue. Also, the caste census showdown, viewers, continues. The debate continues, and BJP also is upping the ante on the Congress party. And not to forget what's happening in Wayanad. Republic TV's ground reportage on the show tonight. First of all, the headlines, viewers. Presenting by Royal Global University. Northeast can't wait. पढ़ो कुछ बनो. ये जो तुम इतनी वफा दिखाते हो सनम, डर है ये कोई नई दगा तो नहीं? पूरे देश में पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज को राहुल गांधी जी के इरादों पर शंका है. The spat over caste census continues. BJP ups the ante against Rahul Gandhi, says that Congress has always ostracized the backward classes. Death toll crosses 291 mark in Wayanad. Rescue operations continue on war footing. Priyanka and Rahul reach after 72 hours. No end to Iran versus Israel war. Israel confirms Hamas military chief eliminated. Shares video of the attack. Honorable Allahabad High Court has rejected the application of Order 7 Rule 11 filed by Shahi Idgah Masjid, and the Honorable High Court has held that all these 18 suits are not barred by Places of Worship Act, Waqf Act, Limitation Act, Order 23 Rule 3A, as well as the Specific Relief Act, and the next date of hearing is 12th of August. Big win for Hindu side as Allahabad High Court rejects the Muslim side plea challenging the suits of Hindu worshippers and deities in the Krishna Janmabhoomi case. जी, अयोध्या में एक माइनर लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है. समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष सम्मिलित है. इस मामले में समाजवादी पार्टी ने अब तक कोई एक्शन लिया? मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है. इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं. Samajwadi Party link emerges in Ayodhya gang rape horror, but the top brass says not aware of the incident. And Swapnil Kusale wins bronze in shooting, completes India's medal hat trick at the Paris Olympics as the winning running shooting continues. Presenting by Royal Global University. Northeast can't wait. पढ़ो कुछ बनो. Now, viewers, the caste census showdown continues. The debate continues to rage on. And remember, Rahul Gandhi had raked up this matter this monsoon session, and he was met with a solid takedown by the BJP leader Anurag Thakur. The Hamirpur MP has continued to up the ante against the Congress party over caste census. Here's the latest. जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे. Undeterred by the uproar in the Lok Sabha over his veiled jibe at Rahul Gandhi, BJP MP Anurag Thakur stepped up his attack on the Congress. लोग ओबीसी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूं सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन. माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आपको दे रहा हूं. माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है. The Hamirpur MP alleged that the Congress has historically sidelined the backward classes and even demeaned them. जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे. धन्यवाद. जितना करिए. माननीय
सभापति जी। Responding to Rahul Gandhi's charge that he was insulted, Thakur said that the Congress believes that its rivals can take humiliation without striking back. He also accused the Congress of casting aspersions on Prime Minister Narendra Modi's caste. कल कुछ लोगों को मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी, जिसका असर हुआ कि पूरे इकोसिस्टम ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है क्योंकि प्रिविलेज्ड है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बुद्धू कहा करते थे। जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उन्हीं के घर में बुद्धुओं की भरमार है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज दलितों, आदिवासियों को समानता का अधिकार न देने के बहाने बनाते थे। Invoking Rajiv Gandhi, Thakur said that the former Prime Minister stood against reservations, saying it was only a means to encourage quote-unquote fools. The BJP MP further claimed that Rajiv Gandhi and his mother Indira Gandhi sat on the Mandal Commission report. अति बुद्धिमान पुत्र इस देश को बताएंगे कि क्या उनके पिता की नज़रों में पिछड़ा वर्ग बुद्धू था? क्या कांग्रेस राजीव गांधी जी द्वारा दिए गए एक अति घृणित जातिवादी बयान की सार्वजनिक निंदा करेगी? क्या उस बयान के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा? जो लोग आज तक लेगेसी की मलाई खाते आ रहे हैं, आज उनके मुंह में सवाल की खटाई पड़ गई तो झूठ बोलकर जग हंसाई करवा रहे हैं। Thakur's counter came a day after the Congress moved a privilege notice against Prime Minister Modi for coming out in support of his statement in the Lok Sabha. Meanwhile, Bhim Army Chief Chandrasekhar Azad responded to Anurag's fresh jibe at the opposition. Listen in. वैसे आप जाति का जनगणना नहीं करानी चाहिए क्या भाई? उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो आप भी गलती करोगे तो उनमें आप में फ़र्क क्या बचेगा? आप कराओ ना जाति का जनगणना, उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी कर दो, तभी तो देश में पता लगे कि दलित पिछड़ों को क्या मिल रहा है, उनकी क्या हिस्सेदारी बैठती है। तो जातिगत जनगणना जरूरी है। मैं कहूँगा किसी और पे ना टालें, जातिगत जनगणना कराएं और इसका श्रेय भी ले। मैं तो चाहूँगा कि भाजपा के प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, इस बात को की घोषणा करें कि वो जातिगत जनगणना करा रहे हैं। With the opposition taking the attack on the centre over the caste jibe and the BJP spoiling for a fight, expect this battle to intensify in the coming days. हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। Shifting focus to Kerala now, viewers. Wayanad death toll continues to soar amid the catastrophic landslides that had ravaged this district. And amid the mounting death toll and the rescue operation on war footing, politics, unfortunately, continues to brew and only intensify. The blame game is still unfolding, viewers, as more and more people are known to have died in this tragedy. Here's more. Over 280 killed. Swathes of land flattened. Homes, livelihood, gone in a blink of an eye. The catastrophic landslide in Wayanad has left a trail of devastation in its wake. And yet, tragedy of such a scale does not seem to be immune to politics. This is not the moment to speak about politics or put the blame game on anyone, and we are not interested to do that. Clearly, Congress is not interested to do that. We are doing everything possible, whatever it takes to bring back things to normalcy in Wayanad. And today, Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji have all gone to Wayanad to be part of to console, to be personally present there. Calling Amit Shah's claims baseless. मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। Kerala CM Pinarayi Vijayan was quick to pin the blame on the centre. ഇനിയും ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിലൊരു പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക്
കടന്ന് അവിടെ കൂടിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് അടിയിലുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നതിനുള്ള കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് വിഘാതമായി വന്നത്. Calling Shah's claim an exaggeration even, this is what CPI's John Brittas had to say. Here what has happened is that what has been indicated or conveyed to Kerala was a certain level of rainfall. What happened was much above that, and there was not even a single red alert on this particular location. And what Amit Shah ji said is absolutely wrong, because we had shifted lot of people from a particular location which was seen to be little dangerous, but the landslide happened 7 kilometers away from them. It's a dense place, Kerala. So whatever he has said is absolutely incorrect, but we don't want to get into a political mudslide on that. Taking a dig at the Prime Minister himself, here's what RJD's Manoj Jha said. Honorable Home Minister said warnings were given, but you should have seen the letter written by Vijayan Saab, the CM of Kerala, who said he did not receive any such warning. Let's set it aside. What is important today and onwards is to handhold each other and go for a war on a war footing on the rescue operation. Congress too recycled the same worn-out rhetoric. गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने वार्निंग दी थी, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई वार्निंग नहीं थी. वार्निंग जो आई है जब ये घटना घट गई उसके बाद की वार्निंग है. तो ये जनता के साथ पीड़ा के घड़ी में, दुख की घड़ी में ये कैसा विरोधाभास. इसमें तो खुले दिल से ये दिक्कत है केंद्र सरकार की. जहाँ गैर भाजपाई सरकारें होती हैं प्रदेशों में, वहाँ मदद के लिए हाथ सिकोड़ लेते हैं. पिछली बार हिमाचल में भी यही किया, वायनाड में भी यही हो रहा है, और हिमाचल में आज फिर से एक भयंकर तस्दी हुई है. मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि कम से कम मौत के मामले में ईमानदार हो जाएं, गंभीर हो जाएं, और वहाँ पार्टी का झंडा ना देखें, वहाँ सिर्फ जो त्रासदी है उसको देखें. Passing the buck, Congress further blamed the centre for politicizing the issue. Tejasvi Surya was there in the house. He never said anything. He kept quiet. So that is politically they want to attack Rahul Gandhi. But the Lok Sabha proceedings is there. Many occasions Rahul Gandhi raised various issues in the Wayanad constituency. Also the ecological issue, and also so many other issues also he raised there, and also earthquake and other landslide and other issues, and animal conflict also he raised in the Lok Sabha various occasions. But there such a situation, they want to politicalize everything. Even as the death toll continues to mount, politics around the issue knows no end. In the last 48 hours, the entire situation in the Middle East has changed. Hamas has lost its top leadership both on the military front and the political front. At the same time, the leadership in Tehran is fuming over the violation of its territorial sovereignty. Will this now spill over into an all-out conflict between Israel and Iran? For more and latest updates on these stories, stay tuned to Republic TV as we come right back after this short break.